मेरा ख्याल है आप नहीं करेंगे, आई एम क्वाइट श्योर आप नहीं करेंगे, आप बड़े स्ट्रिंजेंट टेस्ट लगाएंगे। एंड आई वुड से कि जब फैसल वावडा केस में भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 ने था तो वो अपनी विम्स और उस पे नहीं किया था, कंसिडर करके किया होगा। आई हैव नो डाउट। नहीं देखिए, वी डोंट डाउट एनीवन्स थिंग, बट यही मैंने बात की ना, मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, हम किसी पे डाउट नहीं करते, हर आदमी अपनी दानिश और अकल और समझ से करता है, कोई किसी का इंटरेस्ट तो नहीं होता है, मगर जब बहुत ज्यादा डिस्कशन आ जाता है ना वो खतरनाक हो जाता है। भंडारी साहब आपका केस आ जाता है और कहते हैं कि सगेशियस है कि नहीं, तो वी वुड हैव हैड टू से दैट यू सगेशियस। मेरे बारे में तो मुझे शक है आप कह देते कि नहीं है। सर मैं बस एक फाइनल इस पे अर्ज कर दूं। भंडारी साहब एक सवाल है मेरा, नैब ऑर्डिनेंस के अलावा कोई और कानून ऐसा मुल्क में मौजूद है कि जिस सेक्शन ऑफ लॉ के नीचे कन्विक्शन हो जाए साथ में उसको ये भी कहे कि फॉर फ्यूचर यू आर डिक्लेयर एज ऑफ द कफ मेरे इल्म में नहीं है जी, मुझे नैब लॉ का ही पता है जी, बट आई नीड टू चेक दैट अप फर्दर, मेरे ऑफ द कफ नहीं है। इवन इलेक्शन लॉज में भी नहीं है सर, रोपा में था, रोपा में तो बहुत प्रोविजंस थी, वो अब इन्होंने खत्म कर दी, अब नहीं, इस पे थी पहले बट वो खत्म कर दी, अब वो सिर्फ उन्होंने कहा जी जो 62 वो सिर्फ उसको डीसीट कर सकता है, डी नोटिफाई कर सकता है इलेक्शन कमीशन। जी ट्राइब्यूनल, बट इवन ट्राइब्यूनल भंडारी साहब कोई ऐसी क्वालिफिकेशन उस जज के लिए भी है जो दूसरों को सादिक और अमीन डिक्लेयर करेगा, क्या वो खुद उसके ऊपर पूरा उतरेगा? Do I have the option of saying कि I don't want to answer? Be very careful. Do I have that option, your ladyship? I would prefer to abstain. मैं फाइनल एक मेरा बस ये अगर आप ये करते हैं कि जी समीउल्लाह is no longer good law, it has to be overruled, तो उस पे जो प्रिंसिपल बस उस पे मेरे सबमिशन है कि जी जो उस पे पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं they will not be affected, उस पे आप जजमेंट सिर्फ लिख लें। ITO वर्सेस सीमेंट एजेंसी 5 साल तो मेरे ख्याल में पिछले इलेक्शन से गुजर चुके, कब हुए थे? नहीं, मैं तो ये मेरी सबमिशन ये जी जो स्टैट्यूट है 232 इन्होंने जो डाला है वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप देखिए, एक तो ये होगा, फिर वो दरवाजा ही खुल गया कि कोई अगर फॉर इंस्टेंस समीउल्लाह बलोच भी नहीं ठहरता है और 232 भी नहीं ठहरता है तो इसका मतलब कि फिर तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। आप जो मैंने आपको कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी प्रोविजंस में से निकालेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं उसको समीउल्लाह बलोच को हम सब्स्टिट्यूट कर दें, आप सबसे अगर आप उसको ओवररूल करते हैं ओके फिर मैं तो ये दो ऑप्शन जी क्योंकि मैं तो किसी एक साइड का प्लीड नहीं कर रहा। पास्ट एंड क्लोज लिखा दो जी, पास्ट एंड क्लोज जी, उस पे ITO वर्सेस सीमेंट एजेंसीज PLD 1969 सुप्रीम कोर्ट 322 at 331 PLD 69 सुप्रीम कोर्ट 322 at 331 जी। और फिर है जी जो बाद में नूर मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद इकबाल खान 1985 CLC 1280 at 1284 but 69 Supreme Court is the one that has been followed. और फाइनली ये जो मैं कह रहा हूँ कि कोई स्टैचूट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की जो इंटरप्रिटेशन की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, उस इंटरप्रिटेशन को अंडू नहीं कर सकता। इस पे आप जजमेंट्स नोट फरमा लें सर। अल जहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1987 Supreme Court 84 at 146 and 193. Sorry, at my lord, 146 and 193. My lord, गुलाम मोहिउद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये इसकी साइटेशन एक दफा है PLD 97 सुप्रीम कोर्ट 84 अल जहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन। दूसरा है जी गुलाम मोहिउद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट 825। और the relevant is at page 897 para 23 by Justice Munib Akhtar. Well, then actually there is a very good formulation by the High Court in TU Plastic Industry versus Federation of Pakistan 2019 PTD 1542 at 1550
which was then followed, my lord, that judgment has been followed by a division bench of the Sindh High Court in 2021 PTD 542. So the proposition is that the statute cannot undo a constitutional amendment, which is a constitutional provision, Because which is interpreted by the Yes, Supreme. Samiullah Baloch has held that this is what 62(1)(f) means. That then becomes, as held in Al-Jihad, that becomes part of the Constitution. That cannot be undone by In the absence of Samiullah, what's the position? once you do away with some. Then you can do anything. No, but then you have to see whether the Parliament has otherwise the competence that's right. in terms of Section 60, Article 62. And I'm saying there is no okay. equivalent No, there I've of 63. understood your point. So law here. Then your lordship will have to fill in that gap, which your lordships can do by relying on 63. That's my threefold submission. My lord, I'm sorry if I haven't come up to your lordship's. No, actually, this last bit was very helpful. You don't mind my saying I'm a very candid person. I will praise when it's required and not praise when it's not required. Maybe I was- But this last proposition was very good. And now, since we don't want anybody's right to be, there must be people here who are candidates for the forthcoming elections. And since they must not violate Islamic injunctions, and I'm sure everyone want to read their Asr prayers, so we will take a short break. Otherwise, someone may file declaration. Your lordship is You going to give us a My lord, synopsis? your lordship will give me a day. I'll अगर आपके पास रफ नोट्स भी हैं तो नहीं, वो आपकी मर्जी है. लिखते थोड़ा सा मैंने लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा सा इनको पॉलिश कि वो होगा Just send ये it आपने tomorrow. हमारे व्यूज भी देखे होंगे तो आपके लिए बेहतर होगा अगर जी इनको ईमेल दे दें. ये तो मिल जाएगा, वेबसाइट से ले लेंगे आप. मैं कर लूंगा. नहीं तो if your lordship ईमेल allow- कर दीजिए if your lordship allows me, मैं कोर्ट एसोसिएट को अगर मैं भेज या ईमेल भी कर दें. ईमेल भी मैं कर जो आपके आसान होगा. ठीक है. My lord, and I have your lordship permission to. तो थोड़े से ब्रेक करके हम आते हैं. Even though मुझे इजाजत है जी. मैं Thank you once again. Thank you very much I'm very grateful. for very short notice that we gave you. No, well, it's And please an don't honor. mind It's the an tougher the question doesn't mean we disagree with you. We want to clarify our own thinking. बिल्कुल ठीक है सर. I'm very grateful. Thank you very much. Very Thank you. grateful. Break.